हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू थिंक जियोपॉलिटिक। सो अभी जस्ट 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि युगांडा के जो आर्मी चीफ है मिस्टर महूजी, उसने टर्की को धमकी दी है कि दे नीड $1 billion एंड अ मोस्ट ब्यूटिफुल टर्किश वुमन टू मैरी, अदरवाइज दे विल अटैक टर्की और दे विल सेंड देयर सोल्जर्स इन टर्की. सो दिस साउंड्स क्रेजी इन अ सिचुएशन. यू कैन एवरीवन विल से कि अभी जब यूएस ईरान का ये वॉर चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग हॉर्मुज स्ट्रेट में, अभी ऑयल प्राइसेस के सब बढ़े हुए चीज़ है. एट दैट टाइम ये न्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? बट या फॉर एज इंडियंस फॉर अस दिस न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज टर्की इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी क्रेजी नाउ इन दिस टाइम्स व्हेन पूरी दुनिया का ध्यान किसी और चीज़ पे है. टर्की इज़ ट्राइंग टू गेट इट्स एक्सेस इन द इंडियन ओशन. आई विल टेल यू हाउ. सो अभी इफ़ यू सी द मैप में, सो टर्की इज़ ट्राइंग टू एंटर द इंडियन ओशन थ्रू सोमालिया. सो बात ऐसी है कि युगांडा और सोमालिया, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ है कि युगांडा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट सोमालिया इन एनी कंडीशन फ्रॉम द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अल शबाब, विच क्रिएट्स टेरर एक्टिविटीज़ across Somalia. So Somalia is the country which is on the Horn of Africa, which also gives access to Indian Ocean ahead. So Uganda is agitated because जब प्रोटेक्शन लेने की बारी आए तो सोमालिया टेक्स द हेल्प ऑफ युगांडा. सो युगांडियन सोल्जर्स गो देयर इन नीड ऑफ मनी एंड दे हेल्प सोमालिया टू टैकल विद अल शबाब. बट जब ऑयल ड्रिलिंग की बारी है, टर्की इज़ प्लानिंग ऑयल ड्रिलिंग देयर, ऑयल रिग्स उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सोमालिया. ऑल्सो दे आर प्लानिंग टू हैव देयर ओन मिलिट्री बेस देयर. और अगर टर्की ने उधर अपना मिलिट्री बेस बना लिया, सो दे विल हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द इंडियन ओशन, विच विल बी अ वेरी बिग थ्रेट टू इंडिया. बिकॉज इफ़ यू सी इन द करंट टाइम्स, इंडिया और टर्की इन दोनों के बीच में हमेशा जो रिलेशंस रहे हैं दैट हैव बीन स्ट्रेन्ड. इफ़ यू सी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इफ़ यू सी ड्यूरिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इन सब के वक्त टर्की हैज़ ऑलवेज अपोज्ड इंडिया. दे वर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड देयर प्राइवेट आर्मी टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. दो इंडिया हैड हेल्प देम ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स, बट दे डिडंट repay back with good faith. So India has to be very cautious. As Indians, this can affect us in a big time if अगर कोई geopolitical situation आ जाए, कोई war हो जाए, so they can obstruct us in the Indian Ocean, they can create us trouble. So for that, what India should do? India should increase their ties with Uganda. India should increase their presence near Israel, and also India should give power to Greece, because Greece and Turkey, these two nations, since 1974 doesn't have good relations. So India, dost ka dost apna dushman, like we have done with Afghanistan to tackle Pakistan, we should do it for Turkey as well, because Turkey though हमसे दूर है, it comes in half Asia and half Europe, but that can cause a big thing because Turkey के जो drones है, Pakistan is using that, so that is giving Turkey a power and edge over India. So every time Turkey is answering or doing mischievous activities against India, India is just noticing it and watching it. But I think it's now time for India to reply back in the same way, just by increasing its presence near the countries which are not in good relationships and terms with Turkey. Yeah, Jai Hind.